हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल इज़ गुड. सो आई वेलकम you all, and today we will start with organic chemistry. Okay, so in organic chemistry we already completed haloalkenes, and from today onwards we will continue with the rest of the units. Okay, so before starting organic chemistry, I want all of you to please complete your D and F block unit, okay, and then switch to organic one. So we will start with haloarenes. Now, before starting haloarenes, I want all of you to please go through haloalkanes once, okay, for the better understanding of haloarenes, because we will see some comparative part between haloalkanes and haloarenes. For that, you must know what are haloalkanes and what we discuss about haloalkanes. So वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद आनी चाहिए, इसीलिए पहले आप अल्किल हैलाइड पूरा कंप्लीट कर लीजिए और उसी के बाद haloarenes पे आइएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. haloarenes. ओके, so haloarenes are nothing but they are the halogen derivatives of arenes. What are haloarenes? In simple language, they are halogen derivative of aromatic hydrocarbon, right? But if someone wants you to define haloarenes, so how will you define haloarenes? So haloarenes, in case of haloarenes, when one or more hydrogen atom of an aromatic hydrocarbon is replaced by the corresponding number of halogen atom is known as haloarenes, or they are also known as aryl halides. ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. बेंजीन, दिस इज योर पेरेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, राइट? सो इन दिस केस वन हाइड्रोजन फ्रॉम हियर, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया है, सब्स्टिट्यूट किया है बाय वन हैलोजन. ओके, तो जहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा वहीं पे वैलेंसी ओपन होगी कार्बन की और वहीं पे हैलोजन आके अटैच होगा. सो योर रिजल्टिंग कंपाउंड इज haloarenes. So I hope definition clear है आप सबको. When one or more hydrogen atom of an aromatic hydrocarbon is replaced, or we can say substituted, by same number of halogen atom, the compound form is known as haloarenes, or they are also known as aryl halides. Now they are also represented by ARX, where AR is your arene or aryl. Okay, aromatic hydrocarbon are also called as arene. Keep this thing in mind. Aromatic hydrocarbons are also called as arenes. तो AR क्या है? It is your arene group or aryl group. X is your halogen, which is nothing but fluorine, chlorine, bromine, iodine, कुछ भी हो सकता है, right? So this is haloarenes. Definition of haloarene. Now haloarenes are again classified in three types depending on the number of halogen atom present. Okay, now consider if one in this compound one halogen atom is present here, so it is known as monohaloarenes. यहाँ पे दो है, then it is dihalo. तीन है, then it is polyhalo. Okay, so we will see one by one. First one is monohaloarenes. So what are monohaloarenes? When one hydrogen atom of an aromatic hydrocarbon is replaced by one halogen atom. Okay, the compounds so form are called as monohalogen derivatives of alkane, or they are also known as monohaloarenes. Mono मतलब one, single. Halo मतलब halogen. Arene is your parent aromatic hydrocarbon. Okay, so this is the example of monohaloarenes, when one hydrogen atom of an aromatic compound is replaced by one halogen atom. Second is your dihaloarenes, or they are also known as dihalogen derivatives of arenes. In this case, when two hydrogen atom of an aromatic hydrocarbon are substituted by two halogen atom. Okay, one hydrogen from here and one hydrogen from here are replaced by two chlorine atoms. So the compound form are known as dihaloarenes. Third is your
polyhalogen derivatives of arene, or they are also known as polyhaloarenes. So in this case, when two or more than two hydrogen atoms, okay, we can say more than two hydrogen atom are replaced or substituted by same number of halogen atom, okay, they are known as polyhaloarenes. So here 1, 2, 3 hydrogen atom are replaced by 3 chlorine atom. So that's why it is example of polyhaloarenes. Okay. So I hope it is clear to every one of you. Classification is clear to every one of you. Okay. Now we will see the nomenclature of haloarenes. Nomenclature of haloarenes. So in case of nomenclature, we have to see common name system and IUPAC name system. Okay. आपने nomenclature already पढ़ लिया है, but still while explaining the each example, I will revise you with the rules of IUPAC and common name system. Okay, but I will advise you to please go through nomenclature once thoroughly, so that for the better understanding of nomenclature. Okay, so here in case of aryl halide, how will you name a compound? We will use the prefix halo. We will use the prefix halo, which is specifically for halogen. Like if F is present, so fluorine is present, right? तो हम नाम क्या देंगे, prefix क्या use करेंगे? We will use fluoro. Cl के लिए we will use chloro. Br के लिए we will use bromo. I के लिए we will use iodo. So this prefix is used to the name of parent aromatic hydrocarbon like halobenzene. Okay. Now consider this example. Here the parent aromatic hydrocarbon is benzene, okay, and one Cl is attached to the parent aromatic hydrocarbon, okay. So यहाँ पे क्या हो गया है, Cl is attached, तो Cl के लिए हम क्या यूज करेंगे, prefix chloro, and parent aromatic hydrocarbon is benzene. So name will be chlorobenzene. Chlorobenzene is a common name as well as it is IUPAC name, okay. Now if more than one halogen atom is there, मतलब in case of dihaloarenes, okay, dihaloarenes में दो halogen atom present रहेंगे. So in that case common name and IUPAC name are somewhat different. In case of common name we use ortho, para, meta, position, right? Like two position are two halogen groups are at ortho position, para position or meta position, right? ऑर्थो पोजिशन कब होता है, व्हेन टू ग्रुप्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर. पैरा पोजिशन कब होता है, व्हेन टू ग्रुप्स आर अपोजिट टू ईच अदर, राइट. दिस वन इज पैरा पोजिशन. अगर ये वाला बी आर यहाँ पर होता तो इट इज ऑर्थो पोजिशन. इफ दिस बी आर विल बी हियर देन इट इज मेटा पोजिशन, ओके. एंड इन केस ऑफ IUPAC वी विल यूज द नंबरिंग, राइट, like 1-2 for ortho, 1-4 for para and 1-3 for meta. This thing you have to remember, okay. Now we all know if more than one halogen atom is present, we use prefix, like depending on the number of halogen atom present in the molecule. Like here 2 halogen atoms are present, so we will use the prefix di. If 3 present, then we will use the prefix tri. If 4 will be there, then we will use the prefix tetra. Depending on the halogen atom present in the molecule, we use the corresponding prefix, right? So in this case, this is your parent aromatic hydrocarbon, that is benzene. 2 Br are attached to the aryl group, right? So common name should be, this is, they are para to each other, para position पे है दोनों. So para dibromo because 2 Br groups are present, benzene, okay. This will be common name. IUPAC name में क्या होगा, 1-4, मतलब we should give the numbering 1 2 3 4, okay. So numbering के बाद फर्स्ट पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन पे आपका Br ग्रुप है, तो 1-4, write 1-4, separate 1-4 with a comma, then give hyphen, then dibromo, di because two bromine groups are there, and then benzene. This is the IUPAC name. So please remember, when IUPAC name is there, we use the numbering depending कि किस नंबर पर प्रेजेंट है, राइट, एंड वी यूज द करस्पॉन्डिंग प्रीफिक्स फॉर डायहैलोअरीन्स.
पॉलीहेलो के लिए अगेन वी गो विद द सेम रूल. ओके, थर्ड इज योर substituent is present. Now in this case substituent is present over here. If अच्छा मुझे इस ग्रुप का नाम क्या है बताओ. दिस ग्रुप इज टोलविन. तो यहाँ पे क्या हुआ है, इन दिस केस आयोडीन इज प्रेजेंट ओवर हियर एंड CH3 ग्रुप इज प्रेजेंट हियर. तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, राइट. So in case when parent aromatic hydrocarbon carries a substituent, then numbering should be given in such a way that the carbon atom to which halogen atom is attached should always get first number. ये चीज़ याद रखना. IUPAC nomenclature में if substituent is present, then नंबरिंग इस तरीके से देना होगा कि जिस कार्बन आइटम को आपका हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है उसे हमेशा फर्स्ट नंबर मिले. ओके, सो नंबरिंग कैसे जाएगी, 1 2 3. इट विल नॉट गो लाइक 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं जाएगी. क्यों? बिकॉज सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए. इफ़ यू गो इन दिस वे तो सब्स्टिट्यूएंट को 5th नंबर मिल रहा है विच इज़ हाइयर. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू कि आपको नंबरिंग कैसे देनी है. ओके, सो IUPAC नेम कैसा होगा, 1 iodo, 1 indicates the position of iodine group in the molecule. Iodo, 3 methyl benzene, right? या फिर 3 iodo toluene. Okay, if you consider the complete group as a toluene group, right? तो iodine किस position पे present है, 3rd position पे present है. Okay, so at that time 3 iodo toluene होगा. If you are not considering the group as a toluene, then you will have to number that group. CH3 group will act as a substituent. Remember this thing. Common name में क्या होगा, now this group is meta position, दोनों meta position पे है, right? मतलब meta position को है एक दूसरे से. So this is meta iodotoluene. I hope it is clear to every one of you. Next is your when 2 different halogen atoms is attached to the aromatic hydrocarbon. Okay, so at that time numbering should be given in such a way that alphabetically जो ग्रुप पहले आता है, मतलब ब्रोमीन B कम फर्स्ट, राइट. क्लोरीन बाद में आता है, क्लोरीन का C बाद में आता है अल्फाबेटिकली. सो ब्रोमीन शुड गेट द लोअर नंबर. ओके, तो नंबरिंग कैसे होगी, 1 2, राइट. इट्स नॉट लाइक 1 2, ऐसे नहीं जाएगा क्योंकि अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, B पहले आता है, ब्रोमीन पहले आता है. ओके, सो IUPAC में क्या होगा, 1 2. ओके, पोजीशन पता चल गई हमको. पेरेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पता है हमको, बेंजीन है. तो हम पहले नाम किसका लिखेंगे, ब्रोमीन का लिखेंगे, इंडिकेटिंग इट्स पोजीशन, राइट. 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो बेंजीन. ओके, सेपरेट द नेम एंड नंबर बाय हाइफन. रिमेंबर दिस थिंग. ओके, कॉमन नेम क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पर है, राइट. मैंने बोला है इफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर दैट पोजीशन इज ऑर्थो. तो ऑर्थो पोजीशन पे है, सो इट्स ऑर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू. नाउ कंसिडर दिस ग्रुप. नाउ दिस इज पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव. In this case 3 bromine groups are there. 3 bromine groups are attached to the ring. तो यहाँ पे क्या होगा, you have to number, right, 1 2 3 4 5 6. 3 bromine group है तो प्रीफिक्स क्या यूज़ करेंगे हम, ट्राई प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, इंडिकेटिंग पर्टिकुलर ब्रोमीन का पोजीशन. मतलब हर एक ब्रोमीन का पोजीशन हमें बाय डिफरेंट नंबर इंडिकेट करना पड़ेगा, separated by comma. 1 3 5 indicating first position, third position, fifth position पे कौन से ग्रुप है, Br ग्रुप है, राइट. सो ट्राई ब्रोमोबेंजीन. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू. ट्राई ब्रोमोबेंजीन. अगर हम इसका कॉमन नेम की बात करें तो इट इज सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन. सिमेट्रिकल इसलिए बिकॉज दे आर सिमेट्रिकल. इफ़ यू पुट अ प्लेन लाइक दिस, अगर सेंटर से आप यहाँ से प्लेन डालोगे तो यू विल गेट 2 इक्वल हाफ, राइट. तो वो सिमेट्रिकल है, दैट्स वाई सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन. सिर्फ इसी केस में आप कॉमन नेम यूज़ कर सकते हो. इसके अलावा अगर कहीं पे ब्रोमीन अटैच है ग्रुप में,
राइट, मॉलिक्यूल में, तो आप उसका कॉमन नेम नहीं दे सकते इन केस ऑफ पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। ओके, इसका नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, व्हेन 2Cl आर अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम शुड बी मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, राइट, मेटा पोजिशन पे है इसलिए मेटा, डाई बिकॉज 2 क्लोरीन ग्रुप है, और बेंजीन, राइट, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। इसका IUPAC नेम कैसा हो सकता है फिर, अगेन यू हैव टू यूज द नंबरिंग सिस्टम 1 2 3, राइट, या नंबरिंग ऐसी जाएगी 1 2 3 4 5, नहीं, नंबरिंग शुड बी 1 2 3, सो इट इज 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन। तो आई होप ऑर्थो, पैरा पोजिशन, मेटा पोजिशन क्लियर है आप लोगों को, राइट, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, आई एम कंसिडरिंग दैट थिंग। ओके, next is your nature of CX bond. Now we already studied the nature of CX bond in alkyl halide, पढ़ा है हमने, राइट, सो उसमें हमने पढ़ा था कि अल्किल हलाइड का जो CX बॉन्ड है दैट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाई इट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एटम एंड halogen atom. We all know that halogen atom is much more electronegative than carbon, right? So what this electronegative atom will do, it will attract the electron pair present in this bond towards itself and acquire partial negative charge, and carbon will acquire partial positive charge, right? So because of this the bond is polar in nature, right? Now we have to study what is the nature of this CX bond in case of haloarenes, right? तो haloarene के केस में CX bond again it is polar covalent bond, right? But yes, there are some differences which we will study, but before that we will see the resonating structure of chlorobenzene. Okay, so this is your chlorobenzene. Chlorine के पास 3 lone pair of electrons है, right? What chlorine will do? Chlorine will donate its 1 lone pair of electron to the benzene ring, and this lone pair of electron of chlorine atom will be going conjugation with the pi electrons of this ring. Okay, they will present in conjugation with the pi electrons of this ring. In short, we will see that there is delocalization of lone pair of electron, right? सो ये लोन पेयर यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, राइट? क्लोरीन ने डोनेट किया है तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही इस कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा एंड दिस कार्बन विल एक्वायर निगेटिव चार्ज, राइट? यहाँ पे बॉन्ड नहीं चाहिए, ओके, नहीं है वहाँ पे बॉन्ड, कंसिडर इट। इसके बाद क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा एंड इट विल फॉर्म बॉन्ड ओवर हियर, ये बॉन्ड बना है यहाँ पे, राइट? अभी जैसे ही बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड ये कार्बन ले लेगा एंड इट विल एक्वायर निगेटिव चार्ज। आफ्टर दैट ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, राइट? ये बॉन्ड बन गया तो ये वाला जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड, ये कार्बन ले लेगा एंड दिस कार्बन अगेन एक्वायर निगेटिव चार्ज, राइट? ये कार्बन, ये वाला जो कार्बन है जिस पे निगेटिव चार्ज है, ये बॉन्ड फिर से यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे फिर से बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड था ये क्लोरीन फिर से ले लेगा एंड क्लोरीन विल अगेन गेन इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? सो दिस 5 resonating structures of chlorobenzene shows the delocalization of the electrons, right? That means in haloarenes the lone pair of electrons on halogen atom is in conjugation with pi electron of the benzene ring. This thing you have to remember, okay? So अभी क्या हुआ है, ये complete resonating structure में हमने देखा कि CX जो बॉन्ड है ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो गया। So due to resonance this CX bond acquire partial double bond character. This CX bond acquire partial double bond character, okay? So in case of haloarene the CX bond
having a partial double bond character. Partial इसलिए because this double bond is not fixed, right? यहाँ पे single bond हो रहा है, यहाँ पे double हो रहा है, फिर यहाँ पे single हो रहा है. Okay, so because of this double bond, CX bond length in case of haloarenes, CX bond length in case of haloarene is shorter, whereas CX bond length in case of haloalkanes is longer. Okay, we all know कि if double bond is there then bond length is shorter, and if single bond is there then bond length is longer. ये तो हमको पता ही है, बड़ी होती है bond length, right? So ये shorter है तो क्या होगा? It is stronger. The bond is stronger. CX bond in haloarenes having shorter bond length, and that's why it is stronger, okay, than the bond which is present in haloalkanes. One more case. In case of haloarenes, chlorobenzene के केस में halogen atom is attached to the sp2 hybridized carbon atom, and in case of haloalkanes, halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon atom. This thing you have to remember. Now, because of this thing, the sp2 hybridized carbon atom is more electronegative, and here the sp3 hybridized carbon atom is less electronegative. So the bond length, like CX bond in case of haloarenes, chlorobenzene के केस में, this bond length is near about 1.70 angstrom unit, and in case of haloalkanes, this bond length is near about 1.77 angstrom unit. So आप देख सकते हो कि यहाँ पे bond length ज़्यादा है और यहाँ पे bond length कम है. So this indicates कि this bond is longer, like shorter bond length and stronger than 1.77 angstrom unit. Okay, I hope it is clear to every one of you nature of CX bond. Fine. So next is properties of your haloarenes. Okay, properties of haloarenes, physical properties of haloarenes. तो physical properties of haloarenes में we have to study the nature, odor कैसा है, like solubility कैसी है, melting point, boiling point कैसा है. तो properties में हम लोग पढ़ेंगे पहले physical properties and then chemical properties. So your haloarenes are colorless liquids. Haloarenes are colorless liquids, or they are crystalline solid. They are crystalline solids. If we talk about their solubility, so they are insoluble in water. They are insoluble in water, but they are soluble in organic solvent. This thing you have to remember. They are insoluble in water, but they are soluble in organic solvents. If we talk about boiling point, in case of monohalogen derivative of arenes, the boiling point is similar to that of alkyl halide. Okay, but though like in case of alkyl halide, Ri का boiling point ज़्यादा होगा then RBr, then RCl, then RF, right? So here also iodobenzene having greater boiling point, then bromobenzene, then chlorobenzene, and then fluorobenzene. Okay, in case of monohalo derivatives. In case of dihalogen derivatives, boiling point is near about same. Dihalo derivative में boiling point is near about same, but melting point is somewhat different. Okay, ortho, this is ortho. Okay, मेटा कैसा होगा? Cl यहाँ पे होगा, Cl यहाँ पे होगा.
पैरा कैसा होगा, बोथ आर एट अपोजिट, Cl Cl. तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 325 केल्विन, here 249 Kelvin, and here it is 256 Kelvin. So you can see the melting point of para isomer is larger than ortho and meta isomer. This is because in case of para isomer this is symmetrical arrangement, right? So जब इसका lattice बनेगा ना, so they are closely packed, they can easily closely pack in the lattice. So because of stronger intermolecular attraction, we required higher energy to melt this para isomer. We require higher temperature to melt this para isomer because the intermolecular attraction is so strong because of the symmetrical arrangement. In this case, the symmetrical arrangement is not there. So that's why when we pack a lattice, or when these atoms are present in the lattice, they are not closely packed. Understood? So that is why the dihalogen, in case of dihalogen, melting point of para isomer is higher than ortho and meta. Boiling point is near about same. Okay, so this is all about the properties of, physical properties of haloarenes.